Hello everyone, I'm Pranjali Singh. I hope you all are doing great and I hope you guys are preparing so well for upcoming FMG exam. So as we all know that FMG exam is very near. So I'm making this video to mention few points which are extremely important, which are very small things, but if you guys follow it in the last few days of your exam, this will actually help you a lot. So I'll mention one by one. In these few days which are left, there are few things that you should be paying attention to. Number one is keep studying whatever you have studied till now. That is extremely important. Please do not study anything that is new. Just revise whatever you have already studied, and you'll have FOMO this time. You'll have that fear of missing out. You will feel like you have forgotten everything that you have studied. That's very normal. And trust me, guys, once you sit in the examination hall and once you see the questions, you will recall each and everything. Just stay confident. This happens with everyone. Everyone feels like in the last days of our preparation, we feels like we have forgotten everything. This is just anxiety, nothing else. You remember everything and you will recall everything in the examination hall. Number two, sleep on time, wake up on time. This is extremely important. Please do not study late night now because very few days are left and your routine matters a lot. In these last few days, you must be preparing yourself to sit for those long hours. Like you'll have to sit for two papers for three hours, 2.5 hours. You'll have to stay like very active and you'll have to concentrate for that duration. So this is the time when you should be working on those things. Number three point is very important. Most of the students must be doing it already. Even if you are not doing, do it for rest of the days. Jitne bhi remaining days hai, it will help you definitely. The thing is कि you have to train your mind to be the most active in the duration जिसमें आपको एग्जाम देना है. You have to train yourself to concentrate for 2.5 hours. तो what you have to do, सुबह 9 बजे you have to sit on the chair. जो भी आपका एग्जाम टाइम है, यू हैव टू सिट ऑन द चेयर एंड सॉल्व MCQs इन दैट ड्यूरेशन. उस 2.5 घंटे में प्लीज ट्रेन योर सेल्फ कि यू डोंट हैव टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, यू डोंट हैव टू मूव फ्रॉम योर चेयर. जैसा प्रॉपर एग्जाम में वी हैव टू सिट एंड वी हैव टू गिव एग्जाम फॉर कंटिन्यूसली फॉर दैट टाइम. यू जस्ट डू इट, यू जस्ट प्रैक्टिस इट एवरी डे. उसके बाद फोर्थ थिंग इज, जो हमारा लंच ब्रेक होता है, प्लीज स्टॉप ईटिंग हेवी मील्स इन दैट टाइम. अभी से फॉर द रिमेनिंग डेज जस्ट टेक वेरी लाइट मील्स इन योर लंच टाइम, जैसा आप एग्जाम दिन जो भी आप खाने वाले हो, सो दैट यू विल ट्रेन योर सेल्फ टू रिमेन एक्टिव इन पेपर 2 एज वेल. बिकॉज इन पेपर 2 इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट. आफ्टरनून का टाइम है, इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेन एक्टिव, टू रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड. सो दिस इज द पीक टाइम व्हेन यू हैव टू ट्रेन योर माइंड कि डू एवरीथिंग दैट यू विल बी डूइंग ऑन द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन. Just think you every day, जितने भी दिन बचे हैं, every day you are going to appear for the examination. Wake up early in the morning, sleep early, then just whatever, do meditation for some time, then solve MCQs in that time period only, जिस टाइम पे आपका एग्जाम है. जो आपका ब्रेक टाइम है, take that break, have a small meal. उसके बाद again जो सेकेंड पेपर का ड्यूरेशन है उसमें बैठ के फिर से हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है. डू एवरीथिंग दैट यू विल बी डूइंग एग्जैक्टली सेम एग्जाम वाले दिन जो करनी है. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, लाइक वॉट एवर डेज आर लेफ्ट, यू कैन डू वन थिंग कि वॉट एवर योर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आर, just have a look at those questions before sleeping. Whatever IBQs you have, 200-300 जो भी हैं, before sleeping half an hour, give half an hour and just पेज पलटने हैं सोने से पहले. just have a look at those images. That will help a lot. And when you get up in the morning, whatever important charts are there, डेटा इज देयर, फैक्ट्स आर देयर, जहाँ से वन लाइनर्स पूछे जाते हैं, जहाँ जो तुम्हारा कैंसर स्टेजिंग है, वॉट एवर कॉन्टेंट विच यू
tend to forget very very frequently, which you tend to forget again and again, like pharma, everything. So abhi this is the time when you wake up in the morning, just give 1 hour to those topics, 1 घंटे, and the revision should be very very quick. You just have to go through the pages, okay? You just have to go through everything. This should be the motive. Abhi this is not the time when you can sit for hours and hours and revise a particular subject. That's not the time. बहुत ही क्विक रिविजन्स करने हैं. रात में सोने से पहले IBQs देख के सो, सुबह उठो. तो what you have to do when you once you wake up, just go through the important और जो most forgettable topics हैं, एक बार just go through those topics, ठीक है? So these are few things that I wanted to mention. Please try to follow these things. This will actually help, because this is the time when every one of you have already read everything, ठीक है? सब कुछ पढ़ चुके हैं हम, सब कुछ हमें ऑलरेडी आता है. सारा खेल है कि हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म दैट डे, ठीक है? तो दैट डे की जो तैयारी है, वो आपको कॉन्सेंट्रेट करना, बैठना, एवरीथिंग. यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, ओके? एंड आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड सी यू. बाय.